Now we are going to understand the post method. And post, as I explained you yesterday, कि हम post जो it's part of the REST method. REST में बाकी और भी method है. These four are important method for CRUD operations. CRUD, create, read, insert, and delete. So these basically we call CRUD operations. Create, read, insert, and delete. जहाँ हम basically चार तरह के operation perform करते हैं किसी भी चीज के लिए regarding to that database part. Insert, update, delete, and get. आप ऐसे भी समझ सकते हो in the term of database perspective. So now post, as I explained you that when we have to something insert into database, we will use post method. Sorry. So let's see in Postman and let's verify through database whether our record is getting properly insert or not by using a post method. So again, we are here. What we have to be do first, we have to select if we have to be insert. अगर हमें data insert करना है, our method will be post. इन पॉइंट विल बी सेम. जो भी आपकी ऑपरेशंस है वो इसकी जो एंड पॉइंट है वो हमेशा सेम रहेंगी. एपीआई स्लैश ट्यूटोरियल्स दैट्स योर एंड पॉइंट. कंटेंट हेडर्स में आ जाओ. ऑथराइजेशन, एज आई टोल्ड यू दैट हमने भी कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं कर रखा है. मींस लाइक दैट जो अभी हमारा इफ यू हैव अ बिल्डिंग, हमारा जो घर है जो गेट है वो गेट ओपन है, कोई भी आ जा रहा है तो कोई भी हमने कवर नहीं कर रखा है. that I will explain you later because it's quite complex topic. So अभी बेसिक के बाद हम इस पे मीडियम और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे आएंगे. हेडर में सिंपल कंटेंट एप्लीकेशन जेसन. Here you can see even though I can take it from here as well. So you can see like these are the response I am getting. ID basically it's a auto generated ID which we call an index in term of database. So you don't need to send it. It will be automatically create. Let's see another example like for IT QA training tutorials. And let's this publish to row. 2 will be not capital, this will be like that. So also you have to be take care about that. Camel casing, कैसे क्या हो सकती है. Once you will send this part, it will create a record inside in your database. But before doing to that part, I'm going to ask a question. If it will be successful, what will be your status code? I didn't tell you yet. मैंने अभी तक नहीं बताया. मैंने सिर्फ ये बताया सक्सेस के केस में आप 200 सीरीज का रिस्पांस पाओगे. 200 सीरीज वी एनोट लाइक दैट 2xx. बट एनीवन नोज दैट, क्योंकि ये सब माइनर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. दे चेक योर बेसिक. दे नो दैट या आपको पोस्टमैन आता है, आप यूज कर पाते हो, बट आपको बेसिक्स आती है नहीं. दैट्स दे चेक दैट. क्योंकि ऑटोमेशन टेस्ट जॉब में यू हैव टू बी चेक द स्टेटस कोड. You have to be right key status code equal to this 200 series. What exactly that one? So can anyone put in a chat कि हाँ basically क्या आएगा? 200 is okay. That's not true. Once it's become part of post request, or could be. Let's see. Because for me also it has been long time to see this part. So there is a difference between put and post. Okay, so let's do that part. One I will send it. So here you can see this is your previous one, so don't think about this part. This is nothing actually. So here you can see your status code become 201 created. It's not become, it's part for successful response. We say that it's a part of 2xx series like that. So basically 200 for get request when request is successful. 201 is for created. So that's we call HTTP status code. Now you can see we have insert one more record. Now let go with our get operation again and see it what happens there. So you may select here from get. You can see you may delete.
there is a nomen of this one. Again, header application JSON. Once you will send it, you can able to see you are getting a total 5 response. This published become false. It's taking a default value. There's something wrong in the API. But here you can able to see like that. Okay, you are getting your last record as well. For an example, total for a time being there are how many records? One, two, three, four. Let's insert few more. So again, go to your post method. Go to this body and become. I push it to which didn't work. So let's go with the default one. We'll see that okay, why it's not taking. Later on we will see it. Even though if you will not send, can anyone tell me if we will not send? So what's the default? What happened? Whether it will be insert or not? In chat you can tell me yes or no. Screen not visible. Is it? Are you not able to see my screen, Amit? Let me share my screen again. Sorry guys. Are you able to see my screen now? Okay, thanks, Bhavesh. I'm going to explain again. No worries. So basically, I was explain. So not sure how long you have been missed. I will go to some basic again. So like here, this is a get method. Once you will send a request, you will see that total response one, two, three, four. I mean from ID to ID5, there is a basically four response you are getting. You can see the status code is 200. Okay. You can verify from database. Are you able to see this EH2 console? Put in a chat yes or no so that I can able to see. Okay, you are able to see the entire screen. Are you able to see this EH2 console? School. So if you run this here, you can able to see how many records for the last record which we inserted. It's also come here. I also take an example. If we have to insert a record, so what happened? Our method becomes get from post. This body is become this one, and there's also one more records like published, which is false. So what I explained that now we are going to IT QA training or IT QA of is of developer training. You can see this has been inserted. The status is 201. And in the response, you can able to see the ID that they associated a ID. Once you come in the database part, the one thing which I asked you in our chat कि देखो भाई जब get रहेगा, if you come to that get part, कि simple जब ये request get रहेगी, if you send this, you will get all these 5 response. Look this which one we inserted. बट जो स्टेटस है 200 रहेगा बट जब पोस्ट रहेगा तो वो 201 रहेगा तो बेसिकली इन केस ऑफ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स वी टॉक लाइक दैट 2xx सीरीज नॉट 200 2xx जहाँ पे x x की वैल्यू 01 02 03 वॉट एवर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन व्हाट ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग ऑफ द रेस्ट कि आप रेस्ट का कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो इसके बेसिस पे उसकी स्टेटस कोड रहती है एंड दैट यू हैव टू वेरीफाई इन योर ऑटोमेशन टेस्टिंग एक्टिविटी तो ये चीज हुआ नाउ यू हैव टू वेरीफाई कि भाई अभी आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया ये डेटाबेस में गया या नहीं गया दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग एक्टिविटी अभी मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब मैनुअल टेस्टिंग है आगे के सेशन में नेक्स्ट वीकेंड जो भी हम करेंगे वो ऑटोमेशन करेंगे सो वंस यू रन दिस पार्ट यू कैन एबल टू सी यस दिस रिकॉर्ड्स हैज बीन inserted so total number of records is 5 now it started from 2 because एक मैंने डिलीट किया था initially तो ये होगा सो नाउ पोस्ट इज क्लियर कि हाँ भाई पोस्ट में क्या हो रहा है
Quickly put in a chat, post clear or not. I'm waiting of you guys for your reply. So get clear हो गया, post clear हो गया. Now we have a two important other things for update and delete. So let's go on the delete. Let's go on the update part. Then at the last we will go on the delete sections. मतलब ये जो हम चीजें हैं हमने गेट को कवर कर लिया. If you can see it from here. Just 1 second. Where is my mouse here? हाँ मैं यहाँ से बोला. We cover this get part. We also cover this post part. Now we are going to put. अगर हमें कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करनी है, कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो हमारा जो लिस्ट का मेथड रहेगा वो पुट रहेगा. एंड हाउ वी डू दैट बाय यूजिंग पोस्टमैन. लेट्स सी. From again this postman tool, you may select a put. As I told you, your API endpoint will be remain same. पुट में क्या होगा कि आपको जो भी जैसे मान लो ये सेकेंड नंबर का रिकॉर्ड्स है. मैं नॉर्मली ये ले रहा हूँ कि आपको ये बॉडी में आपको अपना रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा. बट यू डोंट थिंक सो आई यू हैव टू सेंड एन आईडी. इफ यू आर सेंडिंग इट इट्स फाइन. बट इफ यू आर नॉट सेंडिंग इट दैट्स आल्सो फाइन. बेसिकली आपको क्या करना है कि यू हैव टू बी एसोसिएट इन योर इन पॉइंट कि आपको किस नंबर की आईडी को अपडेट करना है. मतलब मेरा जो इन पॉइंट है वो कुछ ऐसे डिजाइन है. लेट मी कॉपी दिस वन. यहाँ तक तो गेट और पोस्ट चल रहा था हमारा. पोस्ट पे मैंने क्या किया कि बॉडी डाल दी. मतलब आप ऐसे समझो यहाँ तक का ये मेरा गेट ऑपरेशन है. आर यू एबल टू सी माय नोटपैड प्लस प्लस. आई एम होपिंग. ओनली पुट एन इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट. पोस्ट में हमने क्या किया, मेरा इन पॉइंट फिर भी यही था. बट इसमें क्या है, मेरे पास एक और चीज है जिसको हम बॉडी बोलते हैं कि हमें कौन सा डेटा इंसर्ट करना है. दैट वी केप्ट इनसाइड दिस जेसन ऑफ फॉर्मेट. जो भी मेरे पास फील्ड्स थे. फील्ड्स क्या क्या थे? टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड मतलब these three field: title, description and published or not. That we put here actually. मैं फॉर टाइमिंग जस्ट ऐसे रख रहा हूँ ताकि थोड़ा और भी आप लोगों को क्लियरिटी मिले समझने के प्रोस्पेक्टिव से. मैं हम ये बॉडी में डिटेल्स भेज रहे थे जो भी हमें इंसर्ट करना था. अब हमें अपडेट करना है. अपडेट इज अ सिंपल थिंग कि जैसे आपको आपके पास अलमीरा है जिसमें आप अपने क्लास रखे हो या आपके लाइब्रेरीज है जिसमें बुक्स रखे हैं. तो आपको पर्टिकुलर कोई डेस्क पे कुछ चीजें अपडेट करनी है. तो अपडेट किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होगा. अपडेट ऐसे नहीं होगा कि हाँ यू कैन गो इनटू एंड डू इट. मतलब अपडेट आप कैसे करोगे. तो उसके लिए जो एपीआई का फॉर्मेट है, यू विल यूज द पुट मेथड. मान लो मैंने बताया कि भाई जो सेकंड प्लेस है मेरे पास टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं. तो मेरा 8th प्लेस है, मुझे वो अपडेट करना है. तो आई पुट लाइक दैट. और उसके साथ मुझे बॉडी भेजनी है कि जो भी बॉडी का फॉर्मेट रहेगा वो आपका इंसर्ट होगा. जैसे यहाँ पे क्या था मेरा, सॉरी, दिस बॉडी. कि मान लो मैंने भेजा था, मैंने टाइटल में कुछ लिखा था, आई वांट टू चेंज अपडेट अ टाइटल. तो जो भी अपडेट रहेगा मैंने टाइटल में कर दिया, along with this body it will be updated. So जो भी आप ये डेटा भेजोगे ये इस पर्टिकुलर आईडी पे
जाके अपडेट कर देगा। तो हम एक सैंपल लेते हैं सेकंड नंबर का। फ्रॉम अ गेट मेथड वी कैन एबल टू सी, ये मैं फिर से भी बाद में बताता हूँ। सो ये हमारे पास सारे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो ये आईटी डेवलपर है, यहाँ पे भी आईटी डेवलपर ये सही नहीं है, तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे आईटी डेवलपर की जगह कुछ और डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ डेटा साइंस डेवलपर, डेटा साइंस इंजीनियर। मेरा मन हो रहा है इसको अपडेट करने का। मेरा मन हो रहा है या मेरी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम द बिजनेस। सो बिजनेस, इन लेट्स टॉक इन आईटी टर्म्स, सो बिजनेस आस्क्ड you कि these are not a correct data, you have to be update this id2 and keep it properly like data science engineering. From this part you may see like that this part I take it data science engineering training and list publishes a false something, you have to be do that part. But before going to that thing, I could able to recall one more thing. अभी आप देख रहे हो कि आपके पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट? अगर सिर्फ आपको कोई बोले कि मुझे सिर्फ थर्ड नंबर वाला रिकॉर्ड चाहिए या फोर्थ नंबर या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे? Hello. एनीथिंग, जस्ट बी फोकस ऑन योर लर्निंग। सो दूसरा चीज दिमाग में मत रखना कि व्हाई आई विल रेज माय हैंड, एनीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी स्टूपिड थिंग, आई गोइंग टू डू एनी अदर एनी स्टूपिडिटी properly or not. Because as the instructor I would like to, you can get all those basic things. Advanced you can get from anywhere. If you can do Google, you can get lot of things, but these basic things which I'm explaining, you will not basically get, because they assume like that you know this basic, and that's the basically main problem. So please tell me who understand properly or at least basic rest concepts, because I'm going to just ask a basic question. Anyone? You can also put in chat yes, or you can raise your hand. I would like to see your confidence, guys, how exactly you are getting. Okay, no one, is it? Is that bad? I'm explaining you guys.
चलो एक और बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो आपकी एपीआई की डिजाइनिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, होस्ट नेम, पोर्ट नेम, इन पॉइंट। बेसिकली दिस पार्ट को हम इन पॉइंट एचटीटीपी इन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको इससे ब्रेक करोगे तो ये आपका होस्ट नेम हो गया दिस वन, इन पॉइंट हो गया आपका एपीआई ट्यूटोरियल्स, पोर्ट हो गया आपका 8080। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब आप देखो गेट मेथड कॉल करोगे, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। टोटली 10 रिकॉर्ड्स पाओगे। तो 10 रिकॉर्ड जिस आप कैसे पाओगे? ऐसे टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं तो 10 जेसन के ऑब्जेक्ट होंगे लाइक दिस अप टू 10। बट ये रिकॉर्ड ऐसे नहीं ट्रेवल करेगा, इट आल्सो एसोसिएट विद सम ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इट विल स्टार्ट विद दैट बिग ब्रैकेट्स। दैट वाज द मेन क्वेश्चन आई थॉट टू आस्क यू, कि जो आपके 10 के 10 रिकॉर्ड्स हैं वो विद इन एक ऑब्जेक्ट जिसको बेसिकली हम बिग ब्रैकेट बोलेंगे उसके साथ उसके अंदर आएंगे। बेसिकली एक लिस्ट रहेगा। इट्स नॉट अ सिंगल रिकॉर्ड, इट विल बी अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। आप लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स नोट कर लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, मतलब यू कैन स्पेंड सम टाइम्स, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं आना है, आगे सारा खेल ही लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पे है। पर जब एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की, अब आप यहाँ पे देखा इन पॉइंट हो गया। अब मुझे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को चाहिए, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं जब हम ऐसे पास करते हैं। जब हमें किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई एम्प्लॉय आईडी है, कोई स्टूडेंट आईडी है, एनीथिंग, जब हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या स्टूडेंट आईडी के रिकॉर्ड चाहिए तो हम ऐसे एज अ पैरामीटर पास करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अब इन पॉइंट स्लैश आईडी। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमें पर्टिकुलर चाहिए तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने 6 नंबर की जो भी एम्प्लॉय ट्यूटोरियल्स आईडी हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए तो हम 6 करेंगे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं आएगा, दिस विल कम as वन रिकॉर्ड। So that's the difference why basically this big bracket is associated, because you are getting a list of records. Here you are getting only one record, so it will come with one object, just an object. Is that clear? Why the big bracket is there and what it means? And you may note down that basically it's called list, and you have to be understand what does mean of list of records. So I'm coming back. So देखिए मैंने गेट पे सिलेक्ट किया एंड मैंने 6 नंबर की आईडीज की मुझे डिटेल चाहिए। 6 नंबर की जो आईडीज है, अगर आप जाओगे अपने डेटाबेस में यू कैन सी दैट ओके आई टेक इज ऑफ ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। मुझे ये वाला पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, मुझसे बिजनेस ने डिमांड किया भाई मुझे तो एपीआई बनाओ जिसमें मैं जिस वन यू रिमूव दिस यू विल गेट लिस्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। ये क्लियर हो गया। अब आपके पास भाई नया रिक्वायरमेंट आया, आपने यहाँ तक तो क्लियर कर दिया कि भाई कस्टमर जो है वो रिकॉर्ड्स पा जा रहा है, कस्टमर जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर ले रहा है। वी सॉ ऑलरेडी इन आवर पोस्ट पार्ट कि हमें जैसे ही इंसर्ट करना है तो हम बेसिकली इस फॉर्मेट में जैसे इंसर्ट करेंगे। लेट्स गो क्रिएट वन मोर आई टी आई टी आई टी आई टी आई टी बी ए बिजनेस एनालिस्ट वी कॉल्ड आई टी बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप ट्रेनिंग। once post में क्या होता है, once you have to create a records you have to send it, this particular you can see the record has been created। I explain you कि जो http status code it will become 201 and this is the response which you got it, this response you are getting that you may verify in your database। अब तक हमारे पास टोटल 6 आईडी तक के रिकॉर्ड्स थे। जैसे मैं इसको रन करूंगा you may able to see that records become a 7। ये भी इंटर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन था वो पुट पे, हमें particular record now. Guys, please go on mute because I am getting some noise. So other guys please go on mute. जैसे ही हम पुट पे आएंगे, अगर हमें बिजनेस ने बोला भाई ये तो काम ठीक हो रहा है कि हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर ले रहे हैं, हम सारे रिकॉर्ड्स पा भी जा रहे हैं, हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स भी पा जा रहे हैं। अब हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करना है।
तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करना है, तो फॉर द पर्टिकुलर पार्ट यू हैव टू गो हियर. Suppose you have to be select number 2 or number 7. For number 7 we saw that कि हमारे पास ये आया ITBA group. You may copy this. How this has been designed. ठीक है, you may copy this. उन्होंने बोला कि भाई हमें जो है ना ये टाइटल से सिर्फ दिक्कत है. जो आपने टाइटल भेजा है वो बीए ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर नेम होना चाहिए लाइक बिजनेस एनालिस्ट. ये क्या करेगा 7 नंबर पे इस टाइटल को इसको अपडेट कर देगा. लुक, रिस्पॉन्स इज 200. ओके, you can see this IT description has been changed from IT BA group to business analyst group. Let's verify in database. So ये क्या था, IT BA group था. यहाँ पे IT business analyst group हो गया. Have you seen I just sent this one? So क्या हुआ यहाँ पे, this title had become changed. मैंने ये वैल्यू नहीं भेजी description. तो description it inserted a null value. क्या आपने description का कोई रिकॉर्ड ही नहीं भेजा. Published I told you like ये आपका booleans है. By default the boolean value is false, which is a data type, so it become a false. So basically you have to be also send this one more like description. Let's copy it from here. Why you wanted to keep it null? If you wanted, there is no problem. ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं. Anyway we have to be delete the operation. Yes, sir. So again if you go your get records you can able to see that okay भाई मेरा ये अपडेट हुआ कि नहीं हुआ. तो आप देखोगे 7 नंबर पे IT बिजनेस एनालिस्ट हुआ. मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं भेजा था, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट में टाइटल भेजी थी, तो सिर्फ टाइटल अपडेट हुआ, डिस्क्रिप्शन वो नल अपडेट कर दिया. इफ यू नॉट सेंडिंग एनी इन्फॉर्मेशन इट विल बी ब्लैंक. ये भी डिपेंड होता है कि डेवलपर ने कैसे बनाया है. तो ऑल्सो डिपेंड अपॉन दैट डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल. तो अभी किसकी फंक्शनलिटी इस तरह से है. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पुट पार्ट एज वेल कि हाउ टू मॉडिफाई इट. हमने गेट पोस्ट पुट और तीन चीजें कवर कर ली हैं. लास्ट वी आर गोइंग टू कवर दिस डिलीट मेथड कि हम जब डिलीट ऑपरेशंस कैसे करते हैं. बट माय क्वेश्चन टू यू गाइस दैट आर यू एबल टू understand these 3 points? Just put YRN into chat quickly because major part we have covered. Now the last part we are going to cover it. Okay. Delete is a very simple क्योंकि delete करना सबसे easy काम होता है. So you for delete part, let's first understand how it will be in point. I already copied somewhere actually. ये पोस्ट हो गया. ये तो आपने समझ लिया कि इसको हम इन पॉइंट बोलते हैं, हमारा जस्ट इन पॉइंट्स हुआ. अब मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है भाई. मुझे समझ में आया कि ये जो है ना आईटी डेवलपर ये 2 बार एंट्री पड़ी हुई है. आई डोंट वांटेड 2 टाइम्स इन अ रो. सो यू हैव बीन आस्क्ड दैट कि भाई आप टॉप वाला या बॉटम वाला जो भी है वो डिलीट कर दो. यू हैव टू नथिंग टू डू, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट विच वन यू वांटेड टू डिलीट इट. सो आपने ये सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने मेथड सेंड किया, यहाँ से आप सेकेंड नंबर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करना चाह रहे हो. तो नाउ आपका जो सीक्वेंस है वो 3 से स्टार्ट होगा. जैसे ही आप सेंड करोगे तो ये आपका 200 के सीरीज में आया कि मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गया. अब आप जैसे ही गेट पे क्लिक करोगे यू विल नॉट गेट एनी कंटेंट, फोर नॉट फाउंड, रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड. और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे गेट टू पे सेंड पे, यू कैन एबल टू सी दैट योर डिलीट हैज बीन डन सक्सेसफुली. रिकॉर्ड टू गायब हो चुका है. आप वेरीफाई करो डेटाबेस से दैट यू हैव टू बी डू इट ऑलवेज एज ए टेस्ट हो. तो आप देखोगे कि आपका सेकेंड नंबर का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया है. सो दैट पार्ट ऑफ डिलीट्स एक्चुअली.
ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सारे रिकॉर्ड्स से डिलीट कर पाओ, बट लेट्स सी फॉर दिस टेस्टिंग पर्सपेक्टिव वेदर दे डेवलपर मेड इट और नॉट, कि अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, सपोज करो भाई कि आई वांटेड टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर वन, आई वांटेड टू डिलीट ऑल, सो इफ यू विल सेंड दिस वन, it means it's become successful. If you click on get, there is no such an records, so all the record has been deleted. कि अगर आप कोई पर्टिकुलर आईडी नहीं सेलेक्ट कर रहे हो तो वो सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा. So delete clears. Guys, please tell. We have still 10 to 13 minutes. कि डिलीट भी क्लियर हुआ, तो हमने रेस्ट एपीआईज के जो CRUD ऑपरेशंस हैं, जिसके लिए हम गेट पुश पुट और डिलीट करते हैं, वी कवर दिस पार्ट. सो if we come to here, we cover this part actually in part of the rest method कि हमारे get post put और delete everything we have done this part. Now give me a second. I thought to be proceed with now microservices, but we have some lack of times. So in our next session, basically we learn the microservices. कि microservices क्या होती है, difference क्या होता है monolithic से. Once we, I mean on next Saturday we will learn this at the same time. Once we cover this microservices part, so could be next Sunday, we will start our regression test suite where actually you can automate this activity which we just did. And later on, we will go with that load and performance testing via load runner and some other tools as well, which we will learn as part of this training programs. So अभी मैं microservice नहीं start कर रहा हूँ because it will be too much for today, and also just lack of time, within 10 minutes I can't able to complete it. So मैं ये नहीं complete कर रहा हूँ. One thing which I thought to explain with you guys कि हमारा जो लास्ट वीकेंड का सेशन था which I took it for the agile part. So उसके लिए you guys what you can do, you can use bit, um, you can use Jira. Let me put into the chat as well. You can use Jira or Azure boards. I'm giving you an assignment. So just 1 second. Record. Stop recording.